is lecture 5. After the strength of in the strength of materials, we have already covered two topics. The one was simple stresses and strains, and the other one was SFD VMD. Now in SFD, after SFD VMD, another we are going slowly towards third chapter, which is bending stress. Now before we go for bending stress, there are some prerequisites for this bending stress chapter. So we need to understand those prerequisites, and then we will continue with the chapter. Okay, so let's continue. Yeah, so as you can see, there is a chart naming area moment of inertia, right? Now what is area moment of inertia? Now you must have studied moment of inertia. Anybody knows what is moment of inertia? What is this? Yes, anyone from your side? Moment of inertia is a point in the body where the we can balance the whole object at a point. We can concentrate the mass and consider all its motion at that point. But that point is known as center of mass, isn't it? So, but when we talk about moment of inertia, it is that point where we can where the axis can rotate itself. The axis, we can call it. Quite thoda sa wrong. Okay, anyone else would like to try? Yes. Anyone from other division? Okay. Nobody knows what is inertia, moment of inertia. तो जहाँ पे सारे forces act होते center point में, तो जहाँ पे उनका वो होगा. No, we are nothing to. Acha, you might be getting confused with the image which I have shown on the this one. This is nothing to do with the center of mass or the center of gravity. Moment of inertia has nothing to do with that. There is a relation between them, but right now we are not talking about center of mass. So all of you, what your the tendency to resist angular acceleration. Very good, very good. So Prashant Boria is quite correct. Inertia is basically it is the tendency to oppose change in its motion. Now we know that bus mein hum log baithte hain, whenever you are traveling in a bus, let's say, or in any vehicle, and if vehicle suddenly stops, what happens? You people are leaning forward, right? You are tending to move forward because vehicle tries to stop you, but you try to continue the motion because you try to oppose the change in your motion, and that is we call inertia. Now that is a linear inertia, or it is inertia in linear motion. But when it comes to angular motion, we call it as moment of inertia, right? We call it as moment of inertia. Now you must have studied this in earlier physics levels, where moment of inertia of simple geometries you must have studied, radius of gyration and all those things you must have studied. Now here in this particular chapter, we require area moment of inertia. Now instead of mass moment of inertia, we can have area moment of inertia, because there is no much difference between mass moment of inertia and area moment of inertia. Because basically all these objects, if I take a planar object, or let's say if I have a disk, so when the disk rotates, I can say that its cross section rotates about a particular axis, and its cross section is a circular cross section. It can be a rectangle, it can be any shape of cross section. So then if I ignore the density of the material, then area moment of inertia will be there. देखो, mass moment of inertia जो होता है, अगर you must have studied a basic formula for mass moment of inertia, I will get back to that point. In your 11th or 12th standard physics, you must have studied moment of inertia I equal to some mk square. You must have studied this, where m is the mass of the object and k is the radius of gyration, right? Radius of gyration. You must have studied something about this, or else you must have studied moment of inertia of sphere. If I have a sphere, solid sphere, then it is 2 by 5 mr square and so on, right? Have you studied these formulas earlier? Yes, sir. Yes, sir. All of you must have studied. Even in diploma student, they must have studied in strength of materials only, or in other further chapter subjects like theory of machines and all.
Okay, so when I remove the density out of it, matlab, now my inertia depends on the mass of the object and the dimensions. Now it's a sphere, so sphere का dimension radius होता है. But अगर मेरा object है, जो भी object rotate कर रहा है about a particular axis, then my inertia will depend on its mass and its dimensions. But if I remove the mass, मतलब क्या करता हूँ मैं, अगर मैं mass को remove करता हूँ, मतलब if I divide by density, ठीक है, अगर मैं mass क्या होता है, mass होता है density into volume. But if I divide by density, then it will totally depend on the dimensions what are there. Now it will not matter कि वो copper का object था या steel का था. So that is why we call it as area moment of inertia, because we are only focusing on the dimensions. Okay, so what is area moment of inertia? Instead of mass, we will be considering only the surface area which is rotating. Okay, we will consider the cross-sectional area which is rotating. Okay, now you will ask you, I'll come back to that point where why there is a question which should come to your mind. Why we are studying this inertia? Because we are studying some beams and then there is nothing rotating. There's nothing rotating, but what this inertia comes into that bending? So there is a bigger question which we'll be answering in the next coming slides. But before going to that, now let us quickly revise whatever the things we you must have learned or you will be requiring in this further course of chapter. That is how to find out the inertia then. For example, if I have a rectangular like this, let's say I have a rectangle, okay, and if this rectangle is rotating about an axis, you can see here this is rotating now. That means this area is rotating about an axis passing through its center, right? All of you knows what is center of mass. Now I know that you all have passed this mechanics. So in mechanics you have figured out how to calculate the center of mass. For standard shapes we can directly locate geometrical center, the center of mass होता है. But अगर irregular shape है तो you know that how to find out the location of the center of mass. Okay, all of you know this, so I'm not going into that. So now, if I have this particular area and if there are axes passing through its centroid, then how to get the moment of inertia? How to get the moment of inertia? The inertia, the opposition this particular shape will give me while rotating, or if I try to rotate it, how much opposition this shape will give me. So that is I am going to calculate as a inertia. So वो inertia जो होता है उसका कुछ standard formulas है which we'll be remembering. Okay, and then we'll be using it whenever the numerical comes. So for example, the very basic shape we can have is a rectangle. So you can see here there is a rectangle which has center of mass here, centroid here. Center of mass भी नहीं बोलते हम, centroid बोलते हैं, because अभी area I'm not figuring about what is the density and all. Just because of only this area is given, surface is given, so I'll call it a centroid. So I have a centroid here, and centroid में से जाने वाला दो axis है मेरे पास. Let's say I have this is x axis, okay, and this is y axis. Now if my area rotates about x axis like this, it rotates about this way, it rotates about x axis, so it will give me some inertia. So that inertia is given by some formula which is given here. It is given by 1 by 12 bh cube. What is b here? B is the base and h is the height. Okay, b is the base and h is the height. So what is the inertia about an axis passing through its centroid? For a rectangle, it is 1 by 12 bh cube. Okay, and what about y-axis? If the area rotates in this direction, then my inertia will vary. The inertia now it will be hb cube, 1 by 12 hb cube, yeah, b cube h. Let's see here. Now how to remember कि किसका cube लेने का है? So it is simple. So whenever you have a rectangle and you have to take the inertia about any axis, so you have two dimensions for rectangle, horizontal, vertical, या फिर दो dimensions होगा. तो हमें क्या करना है? वो dimension का cube लेना है जो dimension तुम्हारे axis को perpendicular है. For example, if I talk about this axis, ये axis को कौन सा dimension perpendicular है? तो height वाला. So you can see here height का cube आया है, right? अभी अगर ये axis लेता हूँ तो ये axis को कौन सा dimension perpendicular है? तो ये b वाला. तो you can see here ये formula में b का cube है, and rest is h. Getting it? So this is how we can remember how to get the inertia about any axis. Okay. Now these formulas will come to this later on, quite later. So have you understood how to get the inertia of a rectangle axis passing through its center? So bh cube या फिर hb cube depending upon which axis you are selecting. And वो x and y भी common नहीं है. I can call vertical axis as x, horizontal axis as y. There's nothing common in that. So हम लोग इसका कुछ standard नहीं है.
whatever way you want you can write down. Sometimes you will call it as BH cube, sometimes you BD लिखेंगे, depth होगा, breadth होगा, width होगा, length होगा, anything. So what you have to understand here is the inertia find करने के लिए you have to take the cube of such dimension which is perpendicular to axis. Okay. Now next. So this was the first one. Now second one is your triangle. I have a triangle. Now I know the triangle का centroid कहाँ पे रहता है तो तुम्हें पता रहेगा, तो it is 1/3 from the base. 1/3 from the base. So if I have an axis passing through that triangle through that centroid, then here also it is 1/36. The formula is 1/36 BHQ. Instead of 12 for triangle it is 1/36, 1/3 of that. And अभी देखो ये जो axis है इसको perpendicular dimension मेरा height है, तो you can see here height का cube आया है, breadth या base जो है वो same है. Okay, understanding it? Now I may have a rectangle triangle like this. I may have a rectangular triangle like this. Let me draw it. Rectangular triangle where H is this height, B is this. तो यहाँ पे इसका centroid इधर कहीं पे तो आएगा, right? इसमें से जाने वाला axis अगर मैंने ये लिया, तो about this axis, about let's say I'm calling it as X axis, what will be my inertia? My inertia will be 1/36 BH cube, right? But अगर मैंने ये वाला axis लिया जो Y vertical axis centroid में से pass कर रहा है, let's say I'm calling it as Y, then my inertia IY will be 1/36 HB cube, because B is perpendicular to my axis. Okay, so in this way you can write down. For triangle it is 1/36 and for rectangle it is 1/12. Okay, now similarly I can go for circle, which is the third shape. Now for third shape circle, I know the centroid is geometrical center. So यहाँ पे axis पे inertia change नहीं होगा because the object is symmetric about both the axes. The area is symmetric. So therefore my I-axis and I-Y will be same, and it is given by pi by 4, 1/4 pi r raised to 4. 1/4 pi r raised to 4, or else you can call it as pi by 64 d raised to 4. Pi by 64 d raised to 4. Okay, getting it? So you can write down in terms of diameter, or you can write down in terms of this one. Now instead of circle, if I have a semicircle, now this is not symmetric, so that's why the centroid shifts from here to somewhere here. And though you must have studied in in mechanics that the distance of this centroid is, anybody remembers this? How much is the distance of the center? 4r/3 pi. 4r/3 pi. Very good. Who is this? Rohit. Yeah, Rohit. Very good. 4r/3 pi. So now if my axis passes through centroid like this, now यहाँ पे centroid में से जाने वाला ये वाला axis है x axis, और y axis symmetric है अभी भी, ठीक है? तो इसके लिए inertia दोनों पे अलग आता है. Okay. So axis passing through centroid अगर रहेगा, then I will get about y axis it is 1/8 pi r raised to 4. You can see here about y axis. Okay, 1/8 pi r raised to 4. ठीक है? एंड अगर मेरा x एक्सिस अभी यहाँ से पास हो रहा है सेंट्रॉइड में से, आई एम कॉलिंग इट लेट्स से x डैश, बिकॉज़ ये लोग ने यहाँ पे इस ये वाला एक्सिस को x बोला है. आई विल टेल यू व्हाट हाउ टू शिफ्ट द एक्सिस एंड ऑल एवरीथिंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पर्टिकुलर सिंपल फॉर्मूला देख रहे हैं जो एक्सिस सेंटर में से पास करता है, उनके लिए क्या इनर्शिया आता है. तो इन दिस केस inertia for this particular object. Okay, now so when we solve this, yeah, so
So sorry. You can see the inertia for semicircle. Similarly, I can go for a quarter circle. Now quarter circle का centroid तो दोनों side से 4r/3 pi पे होता है. So you can have the inertia about this axis, or else you can have inertia about x axis also. How to calculate the inertia? So inertia about x axis is simple. We can get 1/16 pi r raised to 4. So depending upon our requirement, we'll be using this formulation. If my cross section of the beam is circular, my beam is rectangular, most of times it is rectangular, I section, T section, L section. So that time we'll be using those rectangle, triangular or sections. And these are very rare but can be asked. So therefore I'm just discussing over here. Similarly, if I have an elliptical shape, very rare we have elliptical shape in practice. So if I have an elliptical shape, then I can have the inertia about x-axis and about y-axis. About x-axis it is pi ab cube, where a is the semi-major axis and b is the semi-minor axis. You know that semi-major means this to this distance and semi-minor means this to this distance. Okay. Huh. So we understood that ki inertia kya kya hota hai. But now very basic question. Use this. Okay. So semi-major axis and ellipse के लिए हमने देखा. Now let us go to in more detail. How if I have inertia about a particular section, how I can change to a different section. Okay. Wait a minute. Okay. Now see here. I have a rectangular shape like this. I have two axes and there is a third axis passing through centroid like this. Okay. Now I have three axes. This is my, let's say, x axis. This is my y axis and this is my z axis. You can see here x, y, z all are perpendicular, mutually perpendicular to each other. Now here we use theorem of perpendicular axis. So if I know moment of inertia or the area moment of inertia, if I have moment of inertia or the area moment of inertia passing about an axis passing through its centroid of the object. So I have this is the centroid and all three axes are passing through this. So what is this perpendicular axis theorem says? Your perpendicular axis theorem says that the moment of inertia about an axis perpendicular to the shape iz here, moment of inertia about z axis will be equal to moment of inertia about x axis plus about y axis. Okay? So plus about y axis. In this way we can use the theorem of perpendicular axis theorem. So if I know moment of inertia about x and y, I can find out moment of inertia about z for any of the shape. Okay, the same theorem can be used for mass moment of inertia also. So it's not a common key where we can use this area, and it doesn't matter. The formula is same. Okay, now let us go for some another. This theorem you must have already studied. Just we are recalling it over here. The theorem of parallel axis. Okay, the theorem of parallel axis. Now you can see the parallel axis means what. So again I have, now I'm calling drawing this rectangle again. Sorry.
Okay. So theorem of parallel axis के लिए I'll draw a simple rectangle. Why I'm getting this again and again? Wait a minute. Ignore that diagram. It's not erasable right now. I don't know why. Okay. So let us have new diagram. So I have a rectangle and there is a centroid. I know the inertia about this particular axis. So you know that कि अगर ये इसका base B है, height h है, तो you can write down the inertia about, let's say, y axis. I am calling this as y axis. Now I want to find out the inertia about axis passing through one of its edge. I can see here this axis which is passing through edge. Okay, I am calling this as axis as, let's say, AA axis. Okay, these two axes are parallel to each other and there is a certain perpendicular distance between them. What is the perpendicular distance between them? If this B is the base, the distance between them will be B by 2. Let us call the A is the distance between them. Okay, so what is my theorem of parallel axis says? So my theorem of parallel axis says that the inertia, moment of inertia about a parallel axis IAA is equal to moment of inertia about an axis passing through its center, that is y right now, plus the area of the object into the distance between two axis the whole square. I can call this distance as d or you can call it as a. Let's say call it as d now. Okay, तो अभी मेरा moment of inertia about y axis क्या है अगर मुझे वो पता है, then I can find out about that IAA axis, which is a new axis parallel to this. Now that axis may pass through edge, may pass through somewhere in between. What you need is just the distance between two parallel axes. Okay, अभी अगर मैंने edge पे लिया है तो what will be the inertia about y axis? I know the inertia. कैसे find करता हूँ मैं rectangle के लिए inertia? अगर perpendicular dimension b है तो I will write down rectangle के लिए 1/12. Perpendicular b है मतलब b का क्यूब आएगा तो it will be h b cube plus area is b into h, area of the object is, into distance between the two axes is now b by 2. तो अगर b by 2 का मैंने square लिया तो what I'm going to get is 1/12 b h cube b cube h plus what is this, b into h into b cube b square upon 4. So if you solve this, you will get this will be 1/12 b cube h plus b cube h 1/4. So if you take b cube h common, you will get 1/12 plus 1/4. Now यहाँ पे LCM अगर लेते हैं तो base 12 कर देंगे, तो यहाँ पे multiply करना पड़ेगा, तो that will be 4/12 which will be b cube h. Now you will get it is 1/3 b cube h या फिर h b cube जो भी लिखना है. So you will get inertia about that axis. So once you know inertia about any particular axis, you can find out inertia about a parallel axis as well as a perpendicular axis if you know both these theorems. That is why it is very important to know these theorems. But there is a constraint of this theorem. You should always know the moment of inertia passing through centroidal axis. मतलब जो एक्सिस सेंटर में से पास कर रहा है उसका इनर्शिया तुम्हें पता है तो ही ये दोनों थ्योरम्स यूज कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे पहले केस में भी अगर परपेंडिकुलर एक्सिस दिखा तो तीनों एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं एंड यहाँ पे दोनों में से एक एक्सिस सेंटर में से पास कर रहा है. तो इफ यू डोंट नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस then it will be difficult for you to use these theorems. Okay, that is why I explained you in earlier diagram you should at least remember moment of inertia of any section passing through its centroid. Okay, I hope everybody is clear now how to use these theorems. So this is the formula which we will be using. One is this and the other one is this. Okay, now let's go to the next part. Yeah, now what are the different types of beams which will be using or frequently used in strength of materials? Now have you seen these kind of beams somewhere? Anybody have you seen? Can you give me the application of these beams where we use this kind of beams? सर जो टी बार है Yes. सर टी बार को घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं ना फ्लोर में. Okay. और जो आई बार है उसको भी वहाँ यूज करते हैं. और जो Okay. सर आई बीम दिया हुआ अपने को उसका भी सर वो छत में यूज करते हैं. आई बीम जैसा रेलवे का ट्रैक होता है लगभग वैसा. Yes. So all this kind of beams are used in construction supporting purpose
एंड जहाँ पे वो बेंडिंग या शेयर लोड लेते हैं, मोस्टली बेंडिंग. तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसका अलग अलग हर एक का अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. नाउ वेरेवर सपोज अगर मेरे पास एक ही टाइप का बेंडिंग स्ट्रेस है, मतलब एक ही, आई नो दैट कि बेंडिंग स्ट्रेस एक ही टाइप का आने वाला है, सो आई कैन यूज सिंपली यूज टी बार. टी बार कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द बेंडिंग. ठीक है. अगर लोड बहुत कम है तो आई कैन गो फॉर एल एंगल ऑल्सो. ओके. दिस HSS आर यूज्ड फॉर फ्रेम्स. इफ यू हैव सीन ओवरहेड फ्रेम्स, या तुम्हारा जो सन रूफ बनाते हैं ना हम लोग टेरेस के ऊपर या कहीं पे भी, अगर नॉर्मल गैल्वनाइज जो ये रहते हैं शीट्स रहते हैं उनका अगर मुझे टेम्पररी ये बनाना है, तो आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ HSS स्क्वायर कॉलम्स. अभी इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर भी नहीं है, वो स्क्वायर शेल की तरह हॉलो है अंदर से. दिस इज हॉलो, राइट? हॉलो है ना? हॉलो है ये. दिस इज हॉलो पार्ट, राइट? तो इतना ही क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी वेरी स्मॉल, बट स्टिल दे आर यूजफुल फॉर सपोर्टिंग द बेंडिंग शेप. ज्यादा बेंडिंग लोड नहीं लेंगे, बट अभी वैसे भी वो जो रूफ होते हैं नॉर्मली, उसके लिए मुझे टी सेक्शन आई सेक्शन देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये टी सेक्शन आई सेक्शन क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, इनका खुद का वेट ज्यादा है, राइट? तो दे आर सपोज टू बी यूज फॉर अ वेरी हायर लोड. ठीक है. इफ यू हैव सीन ओवरहेड ब्रिजेस जो रेलवे कंस्ट्रक्शन और इसमें जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वेयर विच काइंड ऑफ बीम्स आर यूज्ड? दिस काइंड ऑफ बीम्स आर यूज्ड, आइदर आई बीम और वाइड फ्लांज या फिर स्मॉलर फ्लांज. बट दिस, तुमने रेलवे ट्रैक देखा है? रेलवे ट्रैक कौन से शेप का होता है? यस, आई एम नॉट गेटिंग यू. व्हाट आर यू सेइंग? आई शेप. हाँ, आई बीम रेलवे तो आई बीम का ही होता है, आई शेप, जहाँ पे नीचे यहाँ पे उसको पाइप लगाते हैं. ओके. और यहाँ पे रेल ट्रैक होता है, उसका थोड़ा सा ऊपर का फ्लांज थोड़ा बड़ा होता है एंड थोड़ा स्मूथ भी होता है फॉर गाइडिंग वेज के लिए, वो अलग से डिजाइन करते हैं. Where we use the C kind of channels, so that is also used in supporting purpose. ठीक है. बट जहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन वी कैन डिसाइड कि कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं. ठीक है. तो नाउ हाउ दीज सिविल इंजीनियर्स और द इंजीनियर्स दे डिसाइड कि विच बीम शुड बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर ब्रिज सेक्शन. अगर टी की जरूरत है तो आई लगाएंगे तो फायदा क्या होगा? अननेसेसरली यू आर कॉस्टिंग द मटेरियल. ठीक है. आई की जरूरत है लेकिन आई वाइड फ्लांज के बदले छोटा फ्लांज. How we will come to know कि what should be the cross section of my beam. Okay. अभी तुमने अगर घर पे नॉर्मल कारपेंटर को बुलाया और कारपेंट्री का वर्क कर रहे हो, तो भी वो बताएगा कि तुम्हें जो वुड लगेगा उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, कम ज्यादा, वो बताता है, राइट? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर कंस्ट्रक्टिंग, उसके हिसाब से वो बताएगा. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी व्हेनेवर द कॉलम्स आर टू बी डिजाइन, वो कॉलम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में अभी तुमने अगर देखा रहेगा, आरसीसी कॉलम्स का तो क्रॉस सेक्शन होता है तो वो ऐसा होता है, सिंपल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, राइट ना? कॉलम्स एंड बीम्स का, कॉलम्स तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कॉलम और बीम में क्या डिफरेंस है. कॉलम्स आर वर्टिकल एंड बीम्स आर हॉरिजॉन्टल. व्हेन आई टॉक अबाउट कॉलम, अगर तुमने अभी मेट्रो ब्रिज के अंदर नीचे के कॉलम देखे तो वो तो सब सर्कुलर है. कई कई जगह पे सर्कुलर है, कई कई जगह पे ये वाले शेप के, राइट ना? हाँ सर. थोड़ा सा ओवल शेप दिया है उसको, कॉर्नर्स को रिमूव करके, मतलब रेक्टेंगल कॉर्नर्स को रिमूव. इसके ऊपर वो जो सपोर्टिंग मेंबर रखते हैं वो तो अलग बात है, जस्ट टू ट्रैक और पूरा जो उसका गाइडवेज है वो सबको सपोर्ट करने के लिए ऐसे टाइप का उसका ब्रिज बना देते हैं. ठीक है. तो दिस इज द कॉलम, ओके, एंड दिस इज द बीम. ये बीम है हमारा, बट ये बीम का भी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. तो वी कैन यूज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बीम्स और वी कैन यूज वेरिएबल क्रॉस सेक्शन. सो हाउ वी विल कम टू नो दैट? सो दैट इज द पार्ट. So before that we need to understand the how to calculate the moment of inertia of this particular beam, or rather why we are calculating inertia of these beams. Okay, why we are calculating the inertia of these beams. So for example, let's go to the next one. Yeah, can you see this? This is a I section beam I have taken. Now this I section beam, whenever it is loaded, just a minute, I will get my scale. Thank you. Yeah, can you see this scale? सबको दिख रहा है? Yes sir. Scale आया है. Okay, can you tell me what is the cross section of this scale? Yes, anyone? What is the cross section? Shape I am calling, I am not asking you the values. What is the shape of the cross section?
सर रेक्टेंगल रहेगा। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल, कैन सी इट ना, दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है मेरा। अभी इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो दिख रहा है अभी, राइट, है ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये जो है वो रेक्टेंगल है, इसका कुछ तो विड्थ है और डेप्थ कम है, बराबर, Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. नाउ टेल मी, अगर अभी ये मेरा, नाउ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, सो इट इज कॉल्ड एज बीम, इट विल बी कॉल्ड एज बीम, राइट? अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसे दो एंड से सपोर्ट किया, so which kind of beam is this? I-beam. Simply supported beam, right? सिंपली सपोर्टेड भी। I है क्या इधर? Rectangle है, okay, fine. Okay, so we are understanding how this and why this inertia comes into picture. Okay, so now can you see this now? Okay, तो अभी मैंने क्या किया, ऊपर से इसके ऊपर अगर लोड दिया, ऊपर से यहाँ पे लोड दिया, what will happen to this beam? बेंड होगा, बराबर? कैसे बेंड होगा? अगर मैंने लोड दिया तो ऐसा बेंड होगा बीम। कैन यू सी दिस, कि अगर अभी मैं इसको नीचे से पुल कर रहा हूँ, ठीक है, दो एंड पे सपोर्ट करके अगर पुल किया तो ऐसा बीम बेंड होता है, ठीक है सबने? अब ये बीम स्ट्रक्चर बेंड होके तुम्हें दिख रहा है, ऐसा बीम बीच में से बेंड होगा, बराबर ना? दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, ये बेंड होगा। when the beam bends, what happens to its cross section? Can you see? मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ। अभी देखो ये क्रॉस सेक्शन को क्या होता है, क्रॉस सेक्शन रोटेट हुआ, क्या ऐसे हुआ ना रोटेट, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो रोटेट हो रहा है। जब मेरा बीम ये सीधा था, ये दिस इज माय स्ट्रेट बीम, राइट, बट व्हेन इट बेंड्स व्हाट हैपेंस, there is a tendency of rotation of this particular cross section, right? Tendency of rotation of this particular cross section. So this cross section, it rotates about its centroidal axis, and that is why we are interested in calculating the inertia of this cross section of the beam. Okay, now you can see here, अभी ये तुम्हें ऐसा स्केल दिया, can you bend it? बेंड कर सकते हो? ये सब लोग कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने अभी बेंड किया, राइट, बराबर? तो मेरा क्रॉस सेक्शन क्या था अभी मुझे बताओ। डजंट मैटर कितना लेंथ है मेरा बीम का, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट दिस, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस बीम, दिस इज द स्पैन ऑफ द बीम, लेंथ और द स्पैन ऑफ द बीम, अंडरस्टूड? व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yeah, this is the span of the beam. And when I talk about cross section, can you tell me what is this called as? This will be called as breadth. And what is depth? Can you give me approximate value of depth? 1 or 2 mm only? Is it so? Right now? Yes, sir. Yes, What sir. is the breadth approximately? 1 or 2 centimeter, let's say, right? This is 2 centimeter, and the depth is 1 mm. Now can you bend this kind of beam? तो देखो मैंने किया है, अभी बेंड तो दिख रहा है तुम्हें, राइट? Now whenever the beam bends, शिवम, हाँ, ओके, हाँ, अच्छा, अभी ये बीम था, अभी मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, बीम का ओरिएंटेशन क्या किया, चेंज किया। अभी कैसे यार क्रॉस सेक्शन में कौन बड़ा है, ब्रेड्थ बड़ा है कि डेप्थ बड़ा है? Breadth. अभी मैं क्या करता हूँ, क्रॉस सेक्शन को चेंज कर, ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। नाउ टेल मी व्हाट इज ब्रेड्थ एंड व्हाट इज डेप्थ। नाउ दिस इज Breadth माय 1 डेप्थ mm. ना, हाँ. ये डेप्थ हो गया और ब्रेड्थ अभी मेरा कम हो गया, राइट? कैन आई बेंड बीम दिस वे? कैन आई बेंड इट नाउ? No, sir. No. Can you tell me why? Sir, the depth was greater than the breadth. That's why Yes. the Yes. Very pulling force required is very much more. Yeah. So whenever now I have a cross section with vertical rectangle, right, where the depth is more. So when I try to bend it, ये resistance ज़्यादा देता है मुझे, ये resistance मुझे ज़्यादा देता है, तो ये bending strength बढ़ जाता है मेरे कॉलम का। Material everything is same था ना, सब कुछ सेम है, ठीक है, बट ये ऐसा बेंड होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये रेजिस्टेंस ज्यादा देता है, मतलब इसका इनर्शिया, ये मतलब अगर मैंने वो रेक्टेंगल देखा होता, ठीक है, तो दो ओरिएंटेशंस मैंने यहाँ पे देखे, आई विल ड्रॉ, दो ओरिएंटेशंस मैंने देखे, एक ओरिएंटेशन ऐसा था, राइट, और एक ओरिएंटेशन ऐसा था, बराबर? Everybody agrees? Now when I talk about the inertia about horizontal axis, because my area rotates
about horizontal axis when the beam bends, मेरा एरिया horizontal axis पे ऐसे रोटेट करता है. You can see here, ये ऐसा रोटेट होता है ना, तो मतलब इसमें ये इसके सेंटर में से जाने वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर वो एरिया रोटेट हो रहा है like this. You can see here, यहाँ पे आई सेक्शन में भी अगर मैंने वो एक्सिस बनाया तो मेरा एक्सिस सेंटर में से जाने वाला ऐसा होगा, जिसके ऊपर ये क्या हो रहा है, बीम रोटेट हो रहा है. कैन सी द एरो. ठीक है, तो अगर ये ऐसा रोटेट होगा मेरा एरिया, और ये केस में भी क्या होगा, सेम वे रोटेट होगा. राइट. नाउ लेट्स से आई कॉल इट एज, लेट्स से ये 1 mm है और ये 10 mm है. ठीक है, मैंने रैंडम वैल्यूज लिया, तो ये होगा 1 mm और ये होगा 10 mm. नाउ टेल मी किसका इनर्शिया ज्यादा आएगा. ये एक्सिस पे इनर्शिया कितना आएगा, 1/12 10 into 1 cube, right, because the axis is perpendicular to 1. and यहाँ पे inertia कितना आएगा, 1/12 1 into 10 cube. is it so? बराबर है या नहीं है? Yes, sir. तो give me in which case the inertia will be more? Second one. That is why it is going to give me the maximum bending strength. Yes or no? Yes, sir. So that is why when you see the columns anywhere, you will see that the columns are more in depth as compared to its width, because they are subjected to bending stress. Are you understanding now? And why it is very, very important for us to calculate the inertia of that shape? Because that inertia of the cross section is going to decide how much will be the bending strength of that beam. Getting it? वैसे दिखते हैं अब तो ये छोटा सा inertia दिखता है, ये कितना छोटा है, but this is going to matter us. मतलब ये बहुत important role play करता है हमारा bending strength में. अभी ये अगर ऐसा था तो इसका inertia कम है तो I can bend it, right? easily bend it. But ऐसा करो, bend ही नहीं होगा. You cannot bend it because the depth is more. And उसका cube है, depth का cube होता है यहाँ पे, देखिए cube होता है, तो 1000 times बढ़ता है strength अगर मैंने orientation proper use किया तो bending strength का. Getting it? So sir, Yes. moment of inertia इससे directly proportional है strength से, bending strength से. We'll come back to that. That is the question now. It's the same question I was going to ask. I know that I figured out कि भाई inertia पे depend तो करता है, but अभी मुझे relation भी नहीं पता है. तो I have to figure out कि भाई उसका equation derive करेंगे तो पता चलेगा ना. Again, slowly we are going to it. But सबसे पहले अभी मैंने इतना तो figure out किया कि भाई inertia, मेरा strength, bending strength जो है material का या beams का is going to depend on the inertia of the cross section. तो next step क्या आता है फिर? How to know how to calculate the inertia. अभी हमको inertia खाली standard shape का ही पता है ना. अभी I section दे दिया तो can you calculate the inertia? No. So that is what we are going to learn first, and then we will see कि inertia पे inverse proportion है कि direct proportion. I will go slowly. Understood? अभी तक कोई doubt? Anyone? No, sir. No? Very good. Okay. चलो. So let's continue now. What I'm going to do is I have shown you the picture. एक I beam मैंने दिया है, उसका cross section का तुम्हें dimensions given है, and they are asking you to find out inertia about both the axes. Let's say I xx I y सब axis पे inertia find करो. कैसे find करेंगे अभी? ठीक है. तो अभी उसके लिए मैं एक example solve करता हूँ यहाँ पे. Wait a minute. अभी इसका जगह नहीं है मेरे पास. I'll go to the new slide and do it. Just a minute. Yeah. Okay. So we have a question number 1, to find out moment of inertia about this axis. So let me draw the two-dimensional this one. Two-dimensional view of this. इसका मैं two-dimensional view बनाता हूँ. देखो कैसे. तो मेरे पास, sorry. ओके, आई सेक्शन मैंने बनाया. नाउ ये आई सेक्शन में
this upper end we call it as flange. Always remember, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Flange. And this middle वाला जो supporting है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Web. Okay, this is also a flange. ये भी क्या है? Flange. This is upper flange, this is lower flange, and the central one is web. Okay, these are the nomenclature. Sometimes they will not give you a diagram. They will say that the flange is 75 cross 20 mm, the web is 15 cross 225 mm, and the lower flange is so and so. You have to draw the I section. Okay, so sometimes that is why you should know कि flange मतलब क्या है और web मतलब क्या है. So as you know, we have let us write down the dimensions now. This is 75 mm, this is 20 mm. अभी ये 20 में और नीचे का 20 अगर छोड़ देंगे तो बीच का जो रहेगा वो कितना रहेगा? ये बीच का जो है वो ओवरऑल 150 है ना शायद. ओवरऑल कितना है? 225 है ना? सर फ्लांज का अपर फ्लांज का लेंथ. फ्लैंज का लेंथ. अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, आई जस्ट मिस्ड आउट. सो इट इज 150. वेरी गुड. हाँ, क्या होगा फिर? 225 में से 40 माइनस किया तो 185. ओके, एंड ये भी होगा 150, सेम है. नाउ दिस इज सिमेट्रिक. ये ऑब्जेक्ट, ये जो शेप है वो सिमेट्रिक है, तो यू कैन डायरेक्टली लोकेट द सेंट्रोइड. कहाँ पे आएगा सेंट्रोइड? एग्जैक्टली सेंटर पे, यहाँ पे. राइट और रॉन्ग? बराबर ना? सेंट्रोइड वहां पे आएगा, तो उसमें से जाने वाला जो एक्सिस है सेंट्रोइड वाला, उसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्स एक्सिस. दिस इज माय एक्स एक्स एक्सिस. एंड उसमें से जाने वाला जो वर्टिकल एक्सिस है उसे मैं क्या बोलूंगा? वाई वाई एक्सिस. ओके, एंड आई एम कॉलिंग दिस एज जी, सेंट्रोइड. जी या सी, तुम्हें जो देना है वो दे सकते हो. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सेक्शन. जो भी पूरा सेक्शन है उसको ये इनर्शिया तुम्हें एक्स एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है. You don't have to find out the inertia about local axis. Now what do you mean by local axis and what do you mean by that? I'll come back to that. Now see here, ये जो I section है वो 3 रेक्टेंगल से बनता है. ये कोई भी देख के बता सकता है, राइट? कौन से 3 रेक्टेंगल? तो ये अगर इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, अगर मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, राइट, तो ये 3 रेक्टेंगल बन गए. ये मेरा पहला रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल और ये मेरा तीसरा रेक्टेंगल. बराबर? ये 3 रेक्टेंगल सबको दिख रहे हैं. एंड मेरा इनर्शिया जो है वो ये तीन रेक्टेंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद माय थर्ड रेक्टेंगल से मैं स्टार्ट करता हूँ. हाउ विल आई फाइंड आउट माय इनर्शिया? तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट inertia about x axis. Now see here very carefully how I am going to do it. Moment. So now you tell me moment of inertia of entire I section about x axis is equal to moment of inertia of third rectangle, moment of inertia of second rectangle plus moment of inertia of first rectangle about x axis. Is it true? तीनों का अगर मैं inertia add करता हूँ, inertia is basically a scalar quantity, so it is just addition. ठीक है, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है जो मैं इसके लिए सोचूंगा. तो अभी ये 3 inertia अगर मैं ऐड करता हूँ, I'll get the total inertia about x axis. Now let's try to figure out what is the inertia of I3 कैसे लिखेंगे. तो उसके लिए see here. Theorem of parallel axis. Yeah, of course we have to use theorem of parallel axis. Now see here, अभी मैं अगर तीसरा रेक्टेंगल लिखता हूँ तो तीसरे रेक्टेंगल का लोकल सेंटर कहाँ पे रहेगा? Forget about the entire body now. तीसरे रेक्टेंगल का लोकल सेंटर यहाँ पे रहेगा, राइट? उसमें से जाने वाला एक्स एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला होगा. बराबर? ये इमेजिनरी एक्सिस है, उसमें से जाने वाला एक्स एक्सिस कौन सा होगा? Just a minute. Yeah. So now, okay. So can you see this? अभी ये जो एक्सिस है तुम्हारा, ये जो मैंने एक्सिस रेड वाला ड्रॉ किया वो येलो को पैरेलल है क्या? ठीक है, तो I can find out inertia of this third rectangle about this red axis and then I can shift it by using parallel axis theorem. I can shift my inertia from here to here. How to shift it? I know it. तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये एक्सिस का inertia लिखता हूँ. ठीक है, देखो एक्चुअली मुझे इनर्शिया, ये पूरा जो रेक्टेंगल है
ये जो थर्ड रेक्टेंगल है, ये इसका पूरा इनर्शिया मुझे अबाउट दिस एक्सिस लिखना है, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, उसके लोकल सेंट्रोइड एक्सिस पे लिखूंगा. अब ये एक्सिस को लिखना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है 1/12, 1/12, राइट. हाँ 1/12 एंड किसको एक्सिस डायमेंशन क्या क्या है 150 एंड 20 है. ठीक है, तो किसको परपेंडिकुलर लेना है, एक्सिस जो डायमेंशन को परपेंडिकुलर उसका क्यूब. तो एक्सिस ये 20 को परपेंडिकुलर है फिलहाल. सो आई हैव टू डू फॉर 150 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यूब. अरे अंडरस्टैंडिंग इट, ये पार्ट से मैंने क्या लिखा है, अरे अंडरस्टैंडिंग इट, ये पार्ट से मैंने क्या लिखा है, ओनली दिस इनर्शिया अबाउट रेड एक्सिस. आई हैव नॉट शिफ्टेड इट. शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, शिफ्ट करने के लिए मुझे जस्ट ऐड करना पड़ता है क्या, तो एरिया क्या है 150 इंटू 20 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस स्क्वायर. मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा. 102.5. अभी देखो ये 185 है तो उसका हाफ कितना होगा यहाँ पे 92.5. 92.5 प्लस उसमें ये 10 ऐड किया बिकॉज ये 20 है तो यहाँ से ये डिस्टेंस 10 होगा. तो 92 प्लस ये 10 अगर मैं ऐड करता हूँ तो इट विल बी 102.5 का स्क्वायर. नाउ कैन यू टेल मी ये जो पूरा मैंने लिखा है ये क्या है, ये क्या है, तो ये है मेरा इनर्शिया अबाउट I3. रेक्टेंगल का. यस, ठीक है, अंडरस्टूड. सो नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, I2 के लिए लिखना है. तो देखो I2 के लिए कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है, अभी रेड दूसरा कलर लेता हूं. तो I2 के लिए मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, ये सारा कलर चेंज क्यों होता है पता नहीं, बट लेट मी राइट डाउन विद रेड वन ओनली. ओके, सो I2 के लिए जब लिखूंगा तो I2 मतलब ये मेरा रेक्टेंगल, लेकिन उसके लिए जो एक्सिस है वो उसी के ऊपर है, मतलब उसका सेंट्रोइड और वो जो एक्चुअल एक्सिस है वो सेम है. तो हियर आई डोंट हैव टू चेंज, मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन. यू कैन सी हियर उसका फॉर्मूला आएगा 1/12 इनटू व्हाट इज द डायमेंशंस. ये डायमेंशन कितना, यू कैन सी हियर ये 15 है ना, तो ये डायमेंशन 15 है, दिस इज 15. सो देयरफॉर मेरा जो फॉर्मूला होगा वो 15 मल्टीप्लाई बाय ये मेरा एक्सिस जो है किसको परपेंडिकुलर है 185 को परपेंडिकुलर है, तो इट इज 185 का क्यूब. ओके, डू आई नीड टू ऐड समथिंग टू दिस, सो नो. व्हाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऑन दैट एक्सिस, मुझे कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया सेकंड के लिए. ना इसमें मैं क्या ऐड करने जाऊंगा अभी, प्लस I1 ये वाला पहला वाले रेक्टेंगल के लिए. बट इफ यू रिमेंबर पहले वाले रेक्टेंगल के लिए सेम ही आएगा बिकॉज ये सिमेट्रिक था, बट सेम डिस्टेंस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा. कैन यू सी इट, ये वाला रेक्टेंगल का जो इनर्शिया होगा क्या होगा 150 इंटू 20 क्यूब बाई 12 प्लस 150 इंटू 20 प्लस डिस्टेंस भी ये सिमेट्रिक है ना पूरा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग I1 के लिए आई विल जस्ट into 2. गॉट इट, अंडरस्टूड. बिकॉज माई I3 is same as I1. I3 is same as right. Are you understanding this? Sir, Yes. ये वापस किया. Okay. So 150 into 20 कैसे हुआ वो, मुझे समझा नहीं. अच्छा, which one? 150 जब हमने शिफ्ट किया एक्सिस. Yes, when I'm shifting it, what is my formula? It is inertia about central axis. This is the inertia about central axis. This is what I have written. ये तो मेरा inertia था, ये लिख दिया. This is your area and this is your distance square. बराबर ना? What is the area of this I3 shape? It is 150 multiplied by 20. बराबर? हाँ सर. Yeah, got it. हाँ, तो अभी इसका आंसर कितना आएगा? Can somebody may calculate and give me the answer? Yes, somebody is giving the answer. 711. If you shift the decimal, कितना आएगा? 1 2 3 71.15 into 10 to 6. Is it correct? 71 point.
15 into 10 raised to 6. And the unit will be millimeter raised to 4. You can see here b h cube है, तो b और h सब millimeter में होता है, तो raised to 4 आएगा. That is my unit for area moment of inertia. Now this is I have written Ixx. Can you write down Iyy? Can you write down Iyy? Yes, sir. How? कैसे लिखेंगे अभी Iyy? Sir, for IYY also we'll take 3 rectangles, and the first rectangle is the rectangles can be the same, बस उसके अंदर जो फॉर्मूला में लोग जो लिखते हैं लेंथ और ब्रेथ का जो साइड रहता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देखो शिफ्टिंग की जरूरत है क्या Iyy में? कोई भी जरूरत नहीं है ना, बिकॉज Iyy जो एक्सिस है वो सबके सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है. यानी सी यार ये इसके भी सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, इसका तो सेंट्रॉइड उसी वही है, ये भी वही है, तो Iyy एक्सिस सबके सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, तो कुछ भी मुझे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है अभी. लेकिन मैं जब Yy एक्सिस के लिए लिखूंगा तो ये एक्सिस किसको परपेंडिकुलर होगा? 150 को, तो मैं लिखूंगा 1/12 into 20 into 150 cube. ओके, एंड दैट सिंपली आई विल मल्टीप्लाई बाय 2. व्हाई? बिकॉज 2 है ना मेरे पास, I1 I3 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस. अभी अगर जैसे ये वाला इसकी बात करेंगे तो इसका एक्सिस जो Yy है वो किसको परपेंडिकुलर है? तो ये 15 का डायमेंशन को परपेंडिकुलर है, ये 15 को परपेंडिकुलर है. So therefore I will write down 1/12 into 185 into 15 cube. Understood? Understood or not? Yes, sir. So can you write down this way? Yes, anyone who didn't understand? Is there anyone who didn't understand? Yes, sir. Why we have not considered the area in the first one? Now see here, when we consider the area, जब I need to shift the axis. अभी देखो ये इसका y axis और ये y axis कोई अलग है क्या? नहीं है ना. rather when I was talking about this, इसका x axis और ये जो x axis मुझे फाइंड करना है वो अलग है ना. तो मुझे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, इसके लिए ये एडिशनल टर्म लिखा AD स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. बट यहाँ पे एक्सिस तो कोइंसाइडिंग है, कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. सो दे हैव नॉट एडेड एनीथिंग. हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. Okay, we'll see one more numerical side. Give me the values. Iyy देखो. yes कितना आएगा वैल्यू? अच्छा, वो टाइप करने से अच्छा बोल दो रे, मुझे वो चैट बॉक्स में खोल के देखना पड़ता है. सेटिंग 11.3. Yes, somebody is saying 11.3 into 10 raised to 6. Is it correct? Yes, sir. 11.3 into 10 raised to 6. Millimeter raised to 4. Now tell me which one is more inertia? Ixx. Ixx more है. तो तुम ये बीम बेंडिंग के लिए, जब तुम ये बीम बेंडिंग के लिए यूज करोगे तो तुम I वाला ऐसा यूज करोगे कि ऐसा यूज करोगे? Yes, Krishna Dubey. Are you understanding it? Why we are calling it as I beam, not H beam? H भी बोल सकते हैं ना उसको. अगर उसको सुला दिया और ऐसा रखा तो H हो गया ना ये, बराबर कि नहीं? बट ऐसा यूज करूंगा तो inertia will be about this axis, and ऐसा यूज करूंगा तो inertia about this axis. Which inertia is more? Of course this inertia is more, right? So therefore we call it as I beam, not H beam. Getting it? इसके लिए इसको हम इसीलिए हम लोग उसको I बोलते हैं, क्योंकि हम लोग I के फॉर्मेट में उसे यूज करेंगे. H के फॉर्मेट में हमें पता है कि कितना भी डायमेंशन है बीम का, उसका inertia कम आने वाला है उधर, because axis will be symmetric and कोई भी inertia उसमें additional terms नहीं आएंगे, so will always be lesser. So we will not use in a H shape, we will always be using it in I shape. Understood? Any doubt?